Warm greetings to all. It is a glorious moment to extend my warm welcome to the outstanding guests, my fellow teachers, dear friends. Here we are meeting here again to start a scientific satisfying journey for 3 days. Indeed, we are grateful to Dr. A.K. Sharma sir to provide us this opportunity to be a part of such courses annually to enrich biology teachers across India. This event would leave the participants much richer in thought, efficiency, ability, experiences, and above all, dispensation of knowledge. To begin the program, we stand before the Lord Almighty in humble prayer. श्रीनारायणतो पुरुषोत्तम गुरुतो सिद्धबुद्धतो स्कंद विनायक सविता पावकतो ब्रह्ममजतो यहवशक्तितो येषु पिता प्रभुतो रुद्रविष्णुतो रामकृष्णतो रहीमतावतु वासुदेवो विश्वरूपतो चिदानन्द हरितो अद्वितीयतो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवतो I'll now invite our mentor, our patron, respected Sharma sir, to enlighten us with his kind words. Sir, please. Namaste. Yes, sir. Yesterday, I was watching World Yoga Day celebration. Maybe that you might be watching that also. It was a wonderful session at UN headquarters, New York, in which our beloved Prime Minister, Sri PM Modi, remembered about the International Year of the Millet and its utility. We are also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, G20 presidency to India, Vasudhaiva Kutumbakam, and World Millet Year 2023. Now, because of the effort of many, one of that Mrs. Suman Joshi ji from Jaipur, this year became the annual feature of biological webinars. And this webinar, we have tried our best to take important topics in a very short time, in very short sessions. The first session, we are taking about the millets in diet. Millets diet is always right. It will be taken by Dr. S.P. Singh. Dr. S.P. Singh is very familiar to us. Everybody knows he is taking session almost in all the webinars and is very popular. Then we'll take another session on CRISPR, CRISPR.
It's a very interesting topic. Say you know very well that it's a technology that allow modification of organism genome at will. And I was reading that this CRISPR-Cas9 is a technology which was developed in 2012 by Jennifer Condra and French professor Emmanuel Charpentier. In 2020, both have got Nobel Prize for this unique contribution in the life sciences research. Second day is a session of climate justice. Will be taken by Dr. Sabyasachi Majumdar. The topic was modified by him, taking care of the recent advances. And the another session, the second session, will be taken by Dr. Sudipto Arora from Jaipur on SDG targets. And the third day, we are having two sessions, one on endangered species recovery and another on epidemiology and coronavirus. They will be taken by Drs. Amitav Ek and Dr. Surendra Pal. Both are technical sessions and the speakers are master of the field. At this junction, I want to convey my thanks to Dr. Sabyasachi Majumdar, who has instrumental in directing us to these very prestigious speakers in this webinar. And this session will be taken by Dr. S.P. Singh. Dr. S.P. Singh, actually, yesterday only we have told him that the session will be taken by you. And he was busy elsewhere. So I'm grateful to him that he accepted our request in a very short time. So now, Suman, over to you. Thank you. Thank you very much. I hope you'll enjoy it. Thank you so much, sir. Yes, for the very first session of the conference, I cordially welcome Shri S.P. Singh, sir. Of course, he doesn't require an introduction because he has been our annual speaker now. Thank you so much, sir, for the time you have taken for us for the session. And today's session, of course, is a very popular topic nowadays. Millets, small seeded grasses, belong to the botanical family Poaceae. S.P. Singh, sir, session is on millet and diet is always right. S.P. Singh, sir, is a training associate, KBS ZIET Chandigarh, teaching experience of 27 years, including training and experience of 12 years in the field of biology and sciences. Conducted various trainings as a resource person and coordinator of over more than 50 workshops and Regional Incentive Award recipient. Also deputed to EOI School, Moscow, Russia for 3 years. Sir, I invite you and let us know more about this No More Mota Anaj, which is earlier known as Mota Anaj, and now Narendra Modi has given the name is a superfood, Shri Anna, to millets. So, sir, please. S.P. Singh, sir. I think there is a technical glitch from his end. Singh Sahab, are you there?
So he is there, but I think some technical issues, technical glitch, I think. So okay, we'll wait till it is Aman going to be So may I? solved. Yeah. Yes, yes. We were discussing that millets are small seeded grasses actually. Earlier, that family was known as Gramini. Now, the new name, botanical name, that is Poaceae. India has globally launched this. I think Sir has joined. Sir, Please, yeah, sir. Sir, most welcome. All yours now. Sir, not audible. You are not audible. Sir, it's not audible. You are not audible. I think Sir is not audible, sir. Cannot hear him. We cannot listen to you. Okay, and we are not listening to him. That's the main problem. Ah. May I call him, sir? हेलो सुमन मैडम हाँ सर. ओ एसपीसी सिंह सर को बोलिए लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन करने के लिए. Okay, I'll send the message. सिंह साहब इसको दोबारा ज्वाइन करो. Sir मैसेज cannot भेज दीजिए. listen. Sir, मैसेज sir, भेज दीजिए. The link in and join again. Yes, yes. हेलो. Yes, yes, yes. Now you are on mute, please. Yes, yes. नो नो. No, Sir, still we yeah. cannot listen to you. No, sir. So till then, someone, Yes, sir. you can give a little summary if you have a millets, or should Yeah, millets. India has globally launched this as a Shri Anna because it is a superfood actually and source of food for source of vitamins and minerals. And United Nations also accepted India's proposal to declare 2023 year as the International Year of Millet. And why not? Because it consumes a little water, very low, it has carbon footprints. That is actually the required need of the time. It can grow in arid conditions also. So, of course, it is a superfood, and so it is no more the cereals of the poor, but in a trend and highly nutritive. and different type of foods that we are eating daily is amaranthus, like the rasgir, it's known as rasgir. Yeah. Then Even barnyard, it is known as sanwa. We are eating during Brat, kuttu, buckwheat, then ragi, finger millet, then yes. kagni, foxman millet, Yes, sir. then That is the little one kodo, that is barley and then sama, little millet, then yes, bajra, pearl yes, millet, jawar, sorghum, then then barley. dena, proso millet, then jowar, sorghum. Like that, many are there, uh, which are known as this Sri Anna. Shri Anna, And yes. nowadays,
If you go to the shop and want to purchase them, they are more costly than the normal wheat or normal rice. Yes. It is, you can see their utility. And whatever superfood the companies are giving, like I have seen Patanjali, Patanjali is supplying some atta that is known as Navratan atta, Navratan flour. It is So having a wheat and rice, combination of, wheat and rice occupied actually this ragi or that the small like millets. They have taken the place of rice and wheat nowadays in the so if diet. you see that they are having all the components that I have just said, Yes, bajra, ragi, yes, jowar, they are having this, then kuttu, and they have made one sir. Navratan Lata and it's branded in the market. It's very costly. So it is the utility of Sri Anna nowadays. Sir has left But the meeting again. eh, Sir has left the meeting. but I want to share one thing with all of you that in during uh, and after 1962 war, there was scarcity of this wheat and rice in the country. And at that time, we have to eat this Sri Anna that was staple food at that time, especially jowar. Jowar was taken at that time, which was a substitute of wheat during that time. But we have never thought that it can be so costly. Now jowar is more costly than that of wheat or rice. Sir is asking, is he audible? Sir, you are not audible, sir. We cannot listen to you. Sir, I think our next speaker has also joined. Samrendranath Banerjee There sir. is some problem with your speaker. You connect it with your this that mobile. भैया को और अन्यों को सबको बता को भी उत्तर देना। Please use your mobile. Suman Joshi, WhatsApp audio. Awesome. Hello, good morning. Am I audible? Yeah. Till now. Sir, good morning. सबसे पहले Good morning, आज sir. Good morning. आपसे connect हुए ना. I am actually out of station, so I'm in another institute. So from there, I'm joined with you. Sir, you're audible. Yes, sir. Okay. You are audible. Savita ji, namaskar. So without any delay, because already 10 to 15 minutes have gone, just be how to connect this. Just give me one more minute.
Hello. Yes, sir. Yeah, it's now. So you are audible and screen is there. Right. So my voice will be coming through mobile, and I'm sharing my screen. That's visible. I can see here. So, with your permission, sir, without any delay, shall I proceed on? Please. Yeah, thank you. Thank you very much. It's good morning to everybody, by the way. And sorry for the delay due to certain technical reasons. And I'm presently in a technical institute, so situations sometimes develop. Being in an institute and then having some technical situations here. Okay. Without any delay, now I am coming to the focus now. Since we are to interact here regarding the issues of millets, and we being teachers, we all know that grains have changed a lot. The food grains, conventional grains, and the previously conventional grains, but later on, or the present days, they were outdated. And then the health issues related with it, and then the health ministry coming into play here. The health issues were discussed by the ministry, and somehow the concept of ancient Indian grains came into being. And these are millets. Wheat and rice जो आजकल हम खाते हैं वो तो अभी green revolution के बाद का situation है that we are now surplus in grains, but there were other grains which were previously used in the different sections of India, Indian subcontinent, and throughout world that lost its significance. Excuse me, Today, sir. yes, ma'am. सर आप अपने लैपटॉप का स्पीकर ऑफ कर देंगे, एको जो हो रहा है ना वो इसलिए Okay. यस सर. या अब ठीक है मैम? हाँ सर ठीक है, फुल स्क्रीन आप. ओके, फुल स्क्रीन आ जाता है. थैंक यू. राइट. या तो जो ग्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट ये आया कि व्हाई इट इज नाउ इन द पिक्चर एंड व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू initiate the process. I think on my laptop I have given it full screen, but आपके पास यहाँ पे full screen नहीं आ रहा है, तो मैं इसको छोटा ही रख रहा हूँ. या मैं इसको छोटा ही रखूंगा. वो मैचअप नहीं हो पा रहा है. आपके पास जो मैसेज जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, दोनों में मैचअप नहीं है, तो इसके लिए मैं उसको स्लाइड शो पे नहीं डालूंगा, स्मॉल रखूंगा. कॉन्सेप्ट सिर्फ पहले समझें. कॉन्सेप्ट ओके. तो सबसे पहले जो मिलेट्स के बारे में बात आ रही है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो एक डिफरेंट सोच रखते हैं, मतलब ही थिंक्स वे अहेड ऑफ द टाइम्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर. Whatever may be the other things, but one thing is very clear that he thinks way ahead. तो उन्होंने वो ऐसी और वो बेसिक्स पे जाते हैं. सर भी शर्मा सर जो हैं वो भी इस बात पे, बीइंग अ केवीएन, वो भी इस बात पे एग्री करेंगे कि आजकल हमें जरूरत है बैक टू बेसिक्स की. एजुकेशन में भी हम बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं. तो ये बैक टू बेसिक जाना और दूर की सोच रखना, ये दोनों का जो मिश्रण है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है. That is one wonderful thing. So before we deal with the issue of millets, let us hear to what the Prime Minister wanted to say on the very first day when the millets were being used. Millets, the international year for millets were being celebrated. It was decided to celebrate it, and the message was passed on globally, and then it was in the news channels. Let us hear what our PM wants to say. Straight on. Sir, please send PowerPoint to me. I'll show it to you. Yes, sir. Yes, sir.
Are you able to hear the sound? No. No, sir. Is the audio coming? No, sir. सर आपका स्पीकर ऑन करके एक बार ट्राई करो तो हो सकता है वो कैच कर लेगा ऑडियो। फोन का भी माइक ऑन हो जाएगा और उसका स्पीकर भी ऑन हो जाएगा तो ये कैच कर लेगा साउंड। और गांबिया के सभी मान्य मंत्रीगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, विभिन्न एनजीओ और स्टार्टअप के युवा साथी देश के कोने कोने से जुड़े। What I'm doing is I'll be sending you the video of it. Otherwise the participants can links मैं उनको भिजवा दूंगा। मैं अब बेसिक मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि टाइम रन शॉर्ट हो रहा है। Right. The point here is what I want to what Prime Minister was specifying is congratulating the Ministry of Health, congratulating the Agriculture Department. He was stressing on the millets and telling about why we require to think about it, why our children want this millet, why we, being human beings, adult human beings, should be concerned about the health of our children, and how can food help in maintaining the health? How can we revive our previously used food materials, food grains, instead of pressurizing on wheat and rice? Let us use certain conventionally used grains. That was his main focus. So let us see why of it first. तो हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चंस आए थे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेट्स की क्यों, किसके लिए है और क्या करेंगे हम इस इंफॉर्मेशन का, क्यों मिलेट्स को रिवाइव करें, क्यों जानवर खाते हैं उनको खाने दीजिए, इंसान क्यों खाएं, मेरे लिए क्या रेलेवेंस है इस इंफॉर्मेशन की, अब मैं क्यों खाऊं, अब मेरे पास वीट है खाने के लिए, राइस है खाने के लिए, मिलेट्स की तरफ हम क्यों बढ़े। तो ये कुछ इश्यूज थे जो डिस्कस हुए थे और यहाँ पे हेल्थ की बात आ रही थी। तो क्वेश्चन ये आया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पेसिफाई किया था कि इस पर्टिकुलर इशू के लिए, मिलेट्स के लिए, स्कूल्स हमारे सबसे बढ़िया माध्यम हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के। और जब भी हम स्कूल्स की बात करते हैं तो टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स में बच्चों की बात करते हैं, उनके साथ एनसीईआरटी की किताबों की बात करते हैं और वहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे और आप सभी इन कैरेक्टर्स से वाकिफ हैं। वन इज भूजो एंड वन इज पहेरी, and they are even keep on storytelling each other. We see in the books, Bhujo is saying something in a question and it is being answered by Paheri in the form of an answer. And here there is a question which Bhujo is asking, am I healthy? Am I healthy? I don't know about it, but itna issue ho raha hai, am I healthy? So then the question starts. In this particular session, we'll be able to identify the grains, which are the millets. We'll be able to differentiate millets from the other types of the grains. We'll be able to enlist the problems that may be faced by the humans due to overindulgence of wheat and rice. And we'll be able to find out the benefits. If wheat is being replaced by millets, then how are we benefited? Can we incorporate millet in our staple diet? This will be the focus, a brief focus of this particular thing. तो कुछ आपके सामने नाम आ चुके हैं मिलेट्स के, कॉमन नेम जो है ज्वार, बाजरा। अगर मैं इसको लेके चलूं
तो जवार है, बाजरा है, रागी है, ये तो हमें पता है। लेडीज के लिए पर्टिकुलरली कुट्टू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुट्टू आपको याद होगा, कॉमन नेम्स हैं ये। जो आप में से कभी किसी ने बर्ड्स को पाला हो, लव बर्ड्स या एनी टाइप ऑफ बर्ड्स, उनको पता होगा चैना एक चीज होती है जो बर्ड्स को खिलाई जाती है। और इधर से साउथ में चले जाते हैं तो ककूम भी है या कंगना भी है, और उसके बाद करोल, सांवा एंड मोरैया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनकी प्रोडक्शंस होती हैं। लेकिन आम तौर पे किसकी होती है? इट इज जवार, बाजरा, रागी, लिटिल बिट ऑफ कुट्टू, ये हमें पता है। नाउ लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन व्हाई एंड हाउ वी आर कंसर्न्ड विद इट। I'll try to mention here that India is an agrarian society. एक किसान है, किसान का देश है, फार्मिंग है। ज्यादातर हिंदुस्तान की जमीन जो है वो फार्मिंग में इस्तेमाल हो रही है, और किसान बेचारा धूप में तपता है, धूप में तप तप के अपना पसीना बहा बहा के खाना पैदा करता है। और आजकल का किसान तो व्हीट एंड राइस के ऊपर है, इसीलिए जो पुराने हमारे ग्रेन्स थे वो पीछे रह गए हैं। और ग्रेन्स में अगर चलें तो हमारे पास जो कन्वेंशनल ग्रेन्स हैं वो व्हीट। अब व्हीट में हमें सबसे पहले पता है कि रोटी, हमें पता है एक ही चीज हम खाते हैं व्हीट से, रोटी बने, चाहे वो प्लेन तवे की रोटी हो, तंदूर की रोटी हो, या फिर जो मॉडर्न सोसाइटी है उनके लिए सेवइयाँ आ जाती हैं, नूडल्स आ जाती है, ब्रेड आ जाती है, पास्ता आ जाता है, और ये अपना बन्स आ जाते हैं। नहीं तो व्हीट को कूट के अच्छी तरह से उसको मैश करके दलिया बना लेते हैं। ये सारा का सारा जो गेहूं है ये हमारा कन्वेंशनल है और हम सब खाते हैं। दूसरा जो ग्रेन हम खाते हैं वो राइस है। राइस व्हाइट कलर में जनरली दिखता है, हम खाते हैं, लेकिन राइस की वैरायटी फ्रॉम टिपिकल ब्लैक कलर टू प्योर व्हाइट कलर, सारे ग्रेडेशंस हैं। राइस हैज मैक्सिमम वैरायटीज, वी नो अबाउट इट, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, यू पीपल आर एक्सपर्ट इन दैट केस। और राइस को खाने का मजा ही कुछ और होता है। पुलाव बनाया जाए, बिरयानी बनाई जाए, या सूखे जीरा राइस खाए जाए, मतलब दिस इज व्हाट इज कन्वेंशनली बीइंग यूज्ड। Where now millets come into play, let's see this particular thing. Let's focus on millets first. बेसिक इंफॉर्मेशन है, मिलेट्स कई जगह पे उगते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल मिलेट कहां पे यूज हो रहे हैं? फॉडर के लिए, इंसान के खाने के लिए नहीं। कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए मिलेट्स कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली मिलेट्स को फॉडर के लिए इस्तेमाल है। जितना भी गाय या भैंस को चारा दिया जाता है वो बेसिकली मिलेट्स होता है। तो ये चीज समझने वाली है। जो फूड हजारों सालों से इंसान के खाने के लिए था, वो फूड पिछले 25-30 सालों से जानवरों को खिलाया जा रहा है। अब सोच लें, हेल्थ में अगर मिलेट्स जरूरी हैं तो कभी जो इंसान हेल्दी रहा करते थे, आजकल जानवर हेल्दी हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलेट्स। मिलेट की प्रोडक्शन इंडिया में बड़े सारे स्टेट्स में होती है, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ वी आर हैविंग मिलेट्स इन डिफरेंट टेरेन्स। पहाड़ी इलाके में एक अलग चीज मिलेगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, पानी का रिसोर्स अलग है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट मिलेट मिलेगी। राजस्थान में पानी की अवेलेबिलिटी कम है, लैंड की बायोकेमिस्ट्री चेंज्ड है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट तरह की मिलेट मिलेगी, लेकिन मिलती तकरीबन मिलेट सभी जगह मिल जाती है। और अगर आप लोग याद करें तो पुरानी पिक्चर जो बनी थी आज से कई सदियों, कई डिकेड्स पहले, शोले, तो शोले में जो एक गब्बर सिंह का एक पेट डायलॉग आता है, और वो जाते हैं गांव में अनाज लेने के लिए। गब्बर सिंह के जो दोनों उसके अंडर होते हैं, जो डकैत होते हैं, तो वहां पे डायलॉग बोलते हैं ना, क्यों हमारे लिए एक मुट्ठी जवार, दे डोंट से एक मुट्ठी व्हीट, दे डोंट से एक मुट्ठी राइस, वो कहते हैं एक मुट्ठी जवार। और फिर दूसरा बंदा जब आता है विलेजर, तो कहते हैं अच्छा बाजरा लेके आए। दैट्स व्हाट द पॉइंट हियर इज। सो व्हाट वाज दैट ड्यूरिंग दोस डेज, जवार एंड बाजरा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। शोले में भी था, लेकिन आजकल हम फोकस किस पे ऊपर कर रहे हैं? राइस एंड व्हीट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज पैडी, all these things are there. This is just a map of India where different type of millets are being
grown, will take care of that particular thing later on. अब मैं डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स को आपके सामने लेके आता हूँ, फोकस करता हूँ सिर्फ मिलेट्स के ऊपर। तो पहले देखते हैं, पहचान सकें, अगर हम बस पे सफर कर रहे हैं, आसपास खेत हैं, खेतों में से हम निकल के जा रहे हैं, तो क्या जो फसल लगी हुई है सड़क के दोनों साइड पे, उस फसल को हम पहचान पाते हैं? देखिए तो सही, क्या है पता तो लगे। ज्वार क्या होती है, बाजरा क्या होता है, हम पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं जवार को। हिंदी में उसको जवार कहते हैं, पंजाबी में आते हैं तो चरी कह देते हैं, अंग्रेजी में सोरगम कह देते हैं। ये इसके नाम। बीज देख लो कैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज द सीड एंड दिस इज हाउ द inflorescence or peduncle it looks like. So when you are crossing through, when you are having a countryside traveling, you find a plant like this, a monocot plant, ribbon-like leaves, okay, and with the structure, upper structure like this. Try to stop there. Try to enter into the field. Hold on to that inflorescence. Hold on to it. Look at it. You will understand the difference between wheat and jawar. This is the first plant, jawar. Now, देखने के बाद हम फोकस करते हैं कि जवार से हमें मिल क्या सकता है. Why we have require millets? Why International Year of Millets is being celebrated? That will come at the last. Anybody who eats jawar or sorghum, what he can get? Proteins are there, vitamins are there. It is niacin, riboflavin, thiamine, copper, ये सारे के सारे हैं. सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स. So what do you want? मार्केट से क्रीम लेके आते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स की, 200 रुपए की, 250 रुपए की, 300 रुपए की. जवार खरीद लो, रोज खाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ेगी. क्रीम 300 रुपए की आती है. जवार थोड़ी सी खरीद लो, पानी में भिगो दो रात को, सुबह उसको पीस दो. पीसने के बाद उसका जब बनेगा, लेप बनेगा, उसको चेहरे पे लगा लो. वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट. ट्राई टू डू इट, एक्सपेरिमेंट ऑन इट. इट्स अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट. लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट. द सेकंड वन इज बाजरा, pearl millet. Right? It looks like slightly grayish green in color. And बाजरे का जो सिट्टा होता है, बाजरे की जो इन्फ्लोरेंस है, वो ऐसे सॉलिड दिखाई देती है. See, compare the jawar and bajra. Jawar looks like little open up, okay? Whereas bajra looks like a solid, compact situations. So you can identify it, bajra, very easily. How bajra helps us? Let us see. It is very good. It helps in anybody who makes bajra as a diet, 1 time a day at least, 2 times wheat, 1 time bajra. What will be the effect? Weight reduction, weight control. The biggest problem these days. Diabetes management, the biggest problem these days. Hair growth, length, diameter, glossiness, nails and skin. बाजरे को भिगो के सुबह उसको पाउडर बना के उसका जो पेस्ट बनता है, जैसे गांव में हम पहले थे, हम जो एक क्ले होती है, चीकनी मिट्टी, वो यूज करते थे फेस पे, सिर पे भी लगा लेते थे. उसी तरीके से बाजरे की पेस्ट, दिस कैन बी यूज्ड फॉर हेड. डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ, it can be controlled by paste of bajra. On Sunday, just put a paste like this, let it dry, relax, then just wash it. Good effects. इन्हीं चीज का तो फायदा वो रामदेव जी उठा रहे हैं. वो बेसिक इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं बिजनेस में, एंड ही इज अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीस. एंड वी आर टीचर्स एंड वी आर नॉट प्रोपेगेटिंग द मैसेज. तीसरे पे आते हैं रागी. रागी, finger millet. See the peduncle. It's very much widespread. एक ही प्लांट के ऊपर इतने सारे गुच्छे लगे हुए हैं. और ये इंसान को देखो, ये कबीला लोग हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं. रागी को कहते हैं गरीबों का खाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता गरीब हेल्दी रहते हैं खाने के बाद,
तो ये समझ में नहीं आती हम पढ़े लिखों को कि रागी खाने वाले बंदे धूप में काम करते रहे, उनको गर्मी नहीं लगती। रागी खाने वाले बंदे, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बड़ी कम पाई जाती है। रागी खाने वाले बंदे, प्रॉपर स्टेपल डाइट रागी खाने वाले बंदों में मिनरल्स, मतलब वो दे आर मोर हार्डी पीपल। और हम वीट खाने वाले बंदे, वी आर बिकम मोर डेलिकेट पीपल। रिफाइंड मील, आटा, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, या मतलब मैदे से बनी हुई चीज, भटूरे छोले अच्छे लगेंगे, मैदे से बनी हुई ब्रेड अच्छी लगेगी। होल व्हीट ग्रेन्स रेयरली वी टेक इट, रागी नेवर वी टेक इट। And then we say we are not healthy. Health, 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 balanced diet. We as a teacher keep on talking of balanced diet and balanced diet. We don't talk about eating millets. You eat millets, everything is okay. That is what is ragi. What ragi gives us? It is high in protein. Again, weight control. Again, skin. और स्किन तो एक ऐसी चीज है कि स्किन के ऊपर काम करना जरूरी है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। स्किन फ्रेश, स्किन ग्लॉसी, skin shining, oily, you are young. For that, you need to take ragi, bajra, and all these millets. Here, it has calcium. Again, diabetes. अब सोचें, डायबिटीज घर घर में है, बीपी घर 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 में है, और फिर डॉक्टर कहता है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, ये मत खाएं, वो मत खाएं। कभी किसी डॉक्टर ने कहा है कि बाजरा खाएं? कभी नहीं कहते। मेडिसिन के लिए कहते हैं, बाजरा खाने के लिए नहीं कहते। यहां पे एक पॉइंट अगर हम एज ए टीचर स्पेसिफाई करें, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, दिस इज व्हाट इज टू बी स्पेसिफाइड। वी नीड टू स्पेसिफाई ऑल दीस थिंग्स, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, these things must be stressed as a teacher, then only it is possible. Coming on to the next one, chena. this was जिसको मैं बात कर रहा था, chena और prosopis millets. इसका कलर देखें, येलोविश कलर है, बड़ा ही खुला हुआ सा इसका पेनिकल है। ये वो खाना है जो घर पे बर्ड्स रखे जाते हैं, उनको खिलाया जाता है, और बड़ा कॉस्टली मिलता है मार्केट में। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। क्यों प्रोडक्शन नहीं होती? क्योंकि इसको खाने वाले इंसान कम है, जानवर ही जानवर बचे हैं, और जो खाते हैं वो तो बढ़िया है। हेल्थ बेनिफिट्स देख लो, इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है, पेलेग्रा को कंट्रोल करता है, डिजीजेस और भी हैं, और सबसे बड़ी बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, देन दिस वन चेना, दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स इन देम। एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय, एक्सक्यूज मी सर, आपका शायद शेयरिंग बंद हो गया है सर। ओके, just wait. Thank you. Is it connected now? Yeah. Are you able to see now? Sir, no. कनेक्ट हो चुका है यहाँ से, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। एक नहीं है सर। मैं connected. I'm presenting again. अब देखिए, आ गया। Yes sir. It's okay. Yes, It's okay. yes sir. Thank you. So we are now on chena. It's yellowish color, slightly yellowish in color, and it is again antioxidant. So अगर सोचें, हमने इस खाने को, चेना को, बर्ड्स को खिला दिया, लव बर्ड्स को खिला दिया, तो उनको तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल गए, वो तो जवान रहेंगे, उनके अंदर विटामिन भी पहुंच गए, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ये तो हम खाते थे पहले। जस्ट
हेलो हाँ सर, यस सर, मैम, मैं एक्चुअली अभी जिस इंस्टीट्यूट में गया हूँ ना, वो यस 1 सर, मिनट के लिए मेरे को फोटो के लिए बुला रहे हैं, तो अगर यस आपकी सर, परमिशन हो मैं एक फोटो खिंचवाया हूँ. oh, sir, please, please sir, please. So give me just 1 minute. Give me Yeah just sir, 1 please, minute. Okay, please. I'm connected here with the sir. Yes sir, Thank please. you. Thank you. सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं. Yes sir, This is very important thing, yes sir, and we must switch over to this product also. yeah sir, for sure. Although I am trying my Benefits. best, whatever I am eating as a flour, I used to mix many things in the wheat flour and then eating. It's very tasty also. But I don't know. I cannot say that how many calories or how many vitamins, minerals it is having. But All the hope so that nutrients, it is having all. fibers, then blood sugar level control, lot of antioxidants, vitamin B especially, like B complex and minerals and ions. So bounty of benefits are there. And there is something, there is a special way to cook also. Some have to, they have to be soaked. If someone knows the recipe of ragi, or most welcome to discuss here. Any participant, please, most welcome. If you are using any millet very often, so anyone from the Ragi is very popular in Ranchi. That is in even South the India also, so ragi idli. Jharkhand In idli capital. also they are using. Even in South also. If someone is using, can you just discuss any interesting recipes? Anyone who is using recipe? Any recipe. Very easy one. And Actually, whenever the question of ragi comes, Yes, ma'am. I I'm back. become little bit enthusiastic. I had done my research on ragi actually. Sir, please. Sir, I am back. yes, sir. Shall I continue, sir? Sir, please. Am I audible? Sir. Right. Thank you. So I was talking about the birds. तो पॉइंट यही है कि बर्ड्स की तो हेल्थ हम देख के रहे हैं, हमारी हेल्थ का क्या है? तो कहीं ना कहीं हमें वी हैव टू गो बैक फ्रॉम द रिफाइंड फूड टू अर्लियर ग्रेन्स. और सीधी सी बात है, प्लांट है, प्लांट का सेल है, सेल लिविंग है, उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. जो लोकल वैरायटी होगी उसके अंदर लोकल मिनरल्स होंगे, और वो लोकल पीपल के लिए हेल्दी है. हमारा एक ना आजकल वो एक मेंटेलिटी सी बनी हुई है, वी नीड एवोकाडो. वन पीस ऑफ एवोकाडो कॉस्ट 150 रुपीज. व्हाई डू यू नीड इट? लेकिन वो स्टेटस सिंबल बन गया. क्या खा रहा है? एवोकाडो. क्या करेगा एवोकाडो? स्किन को ग्लोई बनाएगा, हेल्दी बनाएगा. यू कैन गेट योर स्किन हेल्दी बाय 40 रुपीज. व्हाई यू वांट टू स्पेंड 150 रुपीज ऑन इट? अननेसेसरली हम स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए हेल्थ खराब हो रही है. एक हफ्ते में एक एवोकाडो खाने से स्किन ग्लोई नहीं होती. डेली करना पड़ेगा उसको. डेली कोई करेगा नहीं. लेकिन बाजरा डेली किया जा सकता है, रागी डेली की जा सकती है. सो वी नीड टू थिंक लॉजिकल टर्म्स पे, हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंगना. ये जो मिलेट है इसको ध्यान से देखें. इट इज रिच इन अगेन विटामिन्स बिकॉज इट इज अ प्लांट टिश्यू ना.
Plant tissue will have its, some of the plants are rich in iron, the other plants are rich in calcium, other plants are rich in some specific vitamins. So we need to make a balance of it. It doesn't mean that we keep on eating bajra every day, 3 times a meal. No, not like that. A mixture of bajra in the morning, maybe jawar in the afternoon. आपने अगर याद होगा आपको कि आजकल चाय के साथ स्नैक्स में मिक्स्ड ग्रेन्स आते हैं। बाबा रामदेव जी भी, उनका एक पैकेट आता है, और बाकी जो प्राइवेट हैं उनका भी एक पैकेट आता है। उसमें जवार, बाजरा, रागी प्लस चना प्लस थोड़ा सा ये जो होता है तिल के सिसम सीड्स, और इसके अलावा उसमें थोड़ा सा चना भी डाला हुआ होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, काले तिल सफेद तिल दोनों होते हैं उसके अंदर। तो खरबूजे के बीज भी होते हैं, तरबूज के बीज भी होते हैं उसके अंदर, और पेठे के बीज भी होते हैं। तो ये एक मिक्सचर आजकल मार्केट में मिल गया है, और हमने उसको लिया हुआ है कि सिर्फ थोड़ा सा 2-3 चम्मच लेना, और इट्स अ स्नैक्स, इट्स ओके, वेरी टेस्टी, वेरी रिच। टुडे वी टेक इट एंड टुमारो वील अगेन फॉरगेट इट, one week after we'll again take it. It's not, doesn't work like that. These are the important grains. They are to be taken on daily basis. अगर आपने रोटी आटे की खानी है और साथ में चावल के साथ पुलाव बना के खाना है, खाएं। डेली बेसिस पे शाम को अगर 1 कटोरी मिक्स्ड ग्रेन्स खा लें, इट विल हेल्प। तो शाम को ब्रेड को रोस्ट करके खाना अगर बंद कर दें, बिस्किट्स, कुकीज बड़े प्यार से उन्हें, बेटा क्या खाओगे, कुकीज खाओगे। अगर वो कहना बिस्कुट खाना है तो वो कहेंगे ये अनपढ़ गवार है, कुकीज खाओगे, अरे नहीं 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 ये पढ़ा लिखा है। मतलब ये स्टेटस सिंबल बना रखे हैं, हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं होता उसके। तो अगर शाम को चने लें, या ये वाला जो ग्रेन्स मल्टी ग्रेन्स है, या प्योर फीके चने, काले चने, डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। ये दोनों बड़ी, जिनको आप कहते हैं ये रॉयल फैमिली की जो हैं बीमारियां बनी हुई, घर घर में ये पाई जाती हैं, ये एकदम एलिमिनेट हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं देखो इसको हिंदी में कैसे जोड़ा जाता है। अक्सर जब भी हम चने की बात करते हैं तो घोड़े की बात करते हैं, और कहते हैं जब भी घोड़े को चने खिलाओ घोड़े जैसे दौड़ोगे। व्हाट डज इट मीन? ये फ्रेज हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए हैं। ये जो भी हमारे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया चना खाने से, अगर घोड़े जैसा बनता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया तभी तो वही फ्रेज बना। ये कोई इलॉजिकल थिंग नहीं है। वी हैव टेकन जस्ट, अरे एक स्टेटमेंट है चना खाओ घोड़े जैसे हो जाओगे। इट हैपेंस, इट हैज टू बी डन, देन ओनली यू विल सी इट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। टाइप 2 डायबिटीज का जो बात कर रहा था मैं, इट इज इंक्रीजिंग। हम में से भी कई होंगे, कईयों को डायबिटीज होगी, बीपी होगा। तो सोचें आज के सेशन से हमने क्या सीखा। व्हाट इज द टेक अवे मैसेज फ्रॉम टुडेज सेशन? कैन वी इनकॉर्पोरेट समहाउ मिलेट्स इनटू आवर थिंग? अब मैं आता हूं, ये जो कंगनी थी, कंगनी में हरी एंड डार्क दोनों आ रही हैं। इसमें भी आप देखिए एक और जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो कुछ ना कुछ बाजरे जैसा मिलता है, लेकिन कलर इसका डिफरेंट है। तो हम पहचान सकते हैं चीजों को, हम पहचान सकते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं। अगेन इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड भाई? Oxidation damages the metabolism of the body. Oxidation makes us, our aging process is fasten up. It is hasten up. We require antioxidants. And if antioxidants, instead of the tablets of antioxidants, we take natural food as antioxidants, there is nothing beyond it. That is what we need to think about. And we need to tell to the kids. एक ये इंसान है जिसकी फोटो आप देख पा रहे हैं। इनके कुछ YouTube में चैनल्स हैं जिन्होंने इन्होंने कंगनी के जो फायदे बताए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन बड़ी मिल जाएगी नेट के ऊपर, लेकिन कभी कभी किसी इंसान ने ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, तो वो वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज नेवर बैड, इट शुड बी टेकन। नाउ आई कम ऑन टू अनदर मिलेट व्हिच इज इन कॉमन टर्म्स कॉल्ड खद्दर मिलेट। अब ये पहचानिए ये क्या है। ये आपने खाया हुआ है, बड़ी जगह पे खाया हुआ है, ये आपके स्नैक्स का पार्ट है। शाम को चाय के टाइम पे ये देखिए मूंगफली पड़ी हुई है, और ये व्हाइट दाने हैं, खाया हुआ है आपने। कोई बताएगा क्या है ये, पहचाने?
वेरी गुड मैडम, सा- मनप्रीत मैडम ने बताया मेरे को, बहुत बढ़िया। हाँ, सो वी नो अबाउट इट। सो सी, जो हम कभी कभी खाते हैं एज अ स्नैक्स, खाते हैं 1-2 चम्मच 4-5 चम्मच खा लेते हैं, तो हाउ दिस इज, कैन वी मेक इट इंस्टेड ऑफ ये जो हमारा वो बना हुआ है, एक तरह का स्नैक्स बना हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी इनकॉर्पोरेट इट एज अ फूड। इसकी खीर बहुत बढ़िया बनती है, बड़ी हेल्दी होती है। अगर इसकी खीर खा ली जाए तो रोटी खाने की जरूरत नहीं है। एक और हमारे में ना प्रॉब्लम है, इंडियंस का जो सिचुएशन बनता है, फॉरेनर्स में और इंडियंस में एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्या होता है, फॉरेनर्स अगर कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, पेट भर जाता है, तो वो रोटी नहीं खाते। हम इंडियंस और पर्टिकुलरली पंजाबीज क्या करते हैं, स्नैक्स खा लिए, उसके बाद चाट वाट भी खा लिया, मतलब पार्टी पे गए किसी के, सारे चाट के स्टॉल्स घूम लिए, स्नैक्स भी खा लिया, बाद में कहेंगे यार रोटी तो खाई नहीं। अब ऑलरेडी योर स्टमक इज फुल ऑफ इट, यू ऑलरेडी टेकन योर न्यूट्रिशन, यू आर टेकिंग एक्सेस ऑफ इट, और फिर बाद में कहते हैं यार मोटे हो गए, बीपी हो गया, शुगर हो गई, ये हो गया। हमारी हेल्दी हैबिट्स, इनको वापस लेके आना है। हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, and in which quantity it is should be taken, that needs to be focused on. Let's come on to one important which is for ladies. जब भी कभी आपका व्रत होता है तो आप कुट्टू की रोटी खाते हो, कुट्टू के आटे से बनी हुई चीजें खाते हो ना। कुट्टू एक्चुअली इज इट्स बकव्हीट। इंडिया में इसको सिर्फ व्रत में खाते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, पर्टिकुलरली रशिया में, दिस इज द स्टेपल फूड, कुट्टू। रशिया में वो वीट वगैरह के ऊपर नहीं, वो वीट तो वो जानवरों को खिलाते हैं, और यहाँ पे हम वीट खुद खाते हैं, और जो मिलेट्स होती हैं उनको जानवरों को खिलाते हैं। सो वी नीड टू somehow we need to picture out how the things are going on in certain states, certain countries. कुट्टू क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है, डायबिटीज के ऊपर काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर हमारे जो रामदेव जी के ऊपर फिर से आ रहा हूँ, वहां पे जब आश्रम में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बिना किसी दवाई से इसको ठीक कर दिया, हमने डाइट खिलाई उसको। और जो डाइट खाने वाले होते हैं उनको किस पे रखा जाता है, घिया। और अगर ग्रेन्स दिए जाते हैं तो क्या दिए जाते हैं, मिलेट्स। अब वो इंसान 15 दिन 20 दिन वहां पे रहता है, उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, उसका बीपी कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है, थैंक यू कहता है बाबा जी को, और वो वापस घर आता है। घर आते सर सबसे पहले कहता है यार 20 दिन हो गए आलू के पराठे नहीं खाए। सारी की सारी कहानी यहाँ पे फेल हो जाती। वो जो शेड्यूल एक बना था वो मेंटेन करना था, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाया। चलिए कुट्टू के बाद अब एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इट्स हॉर्स ग्राम मिलेट, कुल्थी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक स्टेटमेंट चलती है कि अगर पेट किडनी में पथरी है तो उसको कुल्थी की दाल खिलाओ। अब कुल्थी में कुछ तो है, जो ये हमारा एजेस के साथ जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बड़ों ने हमारे को इंफॉर्मेशन दी है, कुल्थी की दाल खिलाओ। तो ऐसा क्या है उसके अंदर, वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है भाई, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है भाई। और कुल्थी डाइजेस्ट जल्दी जल्दी नहीं होती है ना, तो वो डिले करती है प्रोसेस को। जब वो डिले करती है प्रोसेस को, तो बॉडी अपने ही रिसोर्सेज को यूज करना शुरू करती है। तो किसी तरीके से रीजुविनेशन, बॉडी का रीजुविनेशन होता है इसमें। आप फास्टिंग भी तो इसीलिए करते हो ना, अंदर कुछ गया नहीं तो बॉडी तो जिंदा है, उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो हाउ इट इज टू बी टेकन, बॉडी यूजेस इट्स ऑन रिसोर्सेज एंड देन इट रीजुविनेट्स। इसीलिए फास्टिंग करने के बाद हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी में एक नई जान आ जाती है, रीजुविनेशन हो गई है भाई। और फास्टिंग नहीं करोगे तो फिर तो जैसा पराठे खाने तो खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now let's compare wheat and millets. I'm coming on to one more person here. Try to search out any video of this person, Dr. Khadr Wali. इन्होंने एक और पॉइंट सामने रख दिया। अभी अभी आप देख सकते हैं, मिलेट्स प्लस वेजिटेबल इज इक्वल टू मोर फाइबर एंड डज इट हार्म। एक साइड पे हम कह रहे हैं मिलेट्स को खाना है, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि मिलेट्स का कॉम्बिनेशन क्या बनाया जाए, क्या वो वाकई फायदा करेगा, कितना खाया जाए, कितना खाया जा सकता है, फायदा करेगा। लेट अस सी दैट।
इनके वीडियोस जरूर सुनिएगा। खद्दर नाम याद रखें, खद्दर, और खद्दर से आप टाइप करेंगे तो आपको यू विल गेट सम वीडियोस रिगार्डिंग इट, एंड ही हैज गिवन सम टेक्निकल combinations. Vegetable, this type of vegetable with this type of millet gives you benefit, whereas this type of vegetable with another type of millet will not give you that much of benefit. So ये एक मतलब बड़ा ही इन्होंने वंडरफुल सिचुएशंस को एक्सप्लोर किया है डॉक्टर खद्दर ने। नाउ फोकसिंग ऑन एज अ टीचर, सबसे पहले हमारा टास्क क्या है? मिलेट्स किसी को नहीं समझ में आया तो सबसे पहले बच्चों के सामने बैलेंस डाइट की बात करें। आपके सामने 2 इंडियन थाली पड़ी हुई है, बैलेंस डाइट है, सबको पता है, लिखा क्या हुआ छोड़ दें, वो सारे के सारे साइंस के टीचर्स पढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट सब पढ़ाते हैं, उसको छोड़ दें। लेकिन आप इस फोटो को जरूर मत दिखाइएगा। ये एक बर्गर है, ये नूडल्स हैं, और ये एक इंसान बच्चा है जो खा रहा है, अंधाधुन खा रहा है। घर पे चलने वाले ये 2 बड़े मेन इंग्रेडिएंट्स है। कुछ भी हो जाए बर्गर मंगवा लो, कुछ भी हो जाए नूडल्स ले आओ, और इनको हम कह देते हैं फास्ट फूड, और फिर कहते हैं बैड फूड्स। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। फास्ट फूड्स आर नॉट बैड, दे आर द स्टेपल फूड ऑफ सम कंट्री, बट व्हेन वी कुक दैट पर्टिकुलर फूड in our Indian style, by saving some money, it becomes bad. Food itself is not bad. It's a way of cooking, way of presentation that is bad. आप देखिए इसको, आपके सामने क्या आ रहा है। तो एक तरफ इंडियन थाली है, एक तरफ नूडल्स है, कौन सा रिचर है हमें पता है, लेकिन एक तरफ बर्गर है, दूसरी तरफ भी बर्गर है। जो ये वाला बर्गर पड़ा है राइट साइड पे, इसके अंदर आपको आलू की टिक्की तो दिखेगी, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स मेन है। जो बर्गर है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, थोड़े से तिल के सीड्स हैं, ओके, इट्स ओके। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है उसके अंदर सैलड लीव्स दिख रही है, टोमेटो दिख रहा है, अनियंस है, चीज स्लाइस है, मेयोनीज है, चटनी भी है, ठीक है, टिक्की भी है, और बर्गर भी है। सो व्हेन वी गो टू परचेज बर्गर, व्हाट इज आवर ऑप्शन? That is what the point is. A burger in this way, which is on the right side, simple burger, can be called as fast food, can be called as unhealthy food, because it is not balanced. It is not having vegetables. It is not having proteins to that extent. Whereas that on the left side, it has sufficient amount of vegetables. It has sufficient amount of proteins in it in the form of cheese. It has spices in it. And it has, of course, carbohydrates. तो अगर ये 2 फूड हैं हमारे सामने, बर्गर्स हैं, अगर हमने बच्चों को बताना है कि बच्चों को तो ये बता दिया बर्गर बैड है, अगर बैड है तो ये लेफ्ट साइड वाला बर्गर जो है ये कैसे बैड हो जाएगा? अगर ये बैड है तो जितने बंदे इसको खाते हैं क्या वो अनहेल्दी है? ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तभी हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सारे बर्गर बैड हैं, देन वी आर नॉट साइंस टीचर्स। सो वी नीड टू be away from the statement all fast foods are bad. No, it's a way of cooking that is bad. You cook noodles with a lot of vegetables. Instead of making roti out of wheat, you have made noodles out of wheat. Instead of making gobi ki sabji, right, band gobi ki sabji, you have chopped band gobi, cabbage into pieces, and now you're adding cabbage into the noodles. You're adding chili into the noodles. You're adding onion into the noodles, and then spices and मसाले वो सारा का सारा। तो रोटी और सब्जी अलग अलग खाने की, रोटी और सब्जी खाया तो ठीक है, लेकिन नूडल्स खाया तो बैड है। Why? नूडल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। नूडल्स में सब्जी आपने ढेर सारी डाल दी, रोटी में भी, रोटी के साथ भी सब्जी खाई थी, तो बैड कैसे हो गई? वेट बाय वेट, वी नीड टू वर्क ऑन इट। कुकिंग प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चे या आप कहते हैं भैया नूडल्स, ये सब्जी ज्यादा मत डालो, यहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम नाउ कंक्लूडिंग द पार्ट। एक्चुअली वो जो स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड शो नहीं आपके आ पा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड शो नहीं आता है आपके पास, स्टिल हो जाता है वो, मे बी इंटरनेट सडन प्रॉब्लम्स हियर। आपके सामने मैं 2 चीजें रख रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट है, उसकी वजह से वीट प्रोडक्शन बढ़ गई, हमें सब पता है। इसके लिए हमें वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बढ़ गई,
ये भी पता है। फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गई, ये भी पता है। और ये ईयर ऑन चलता रहा तो ये विशियस साइकिल बन गई। अब ये डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन समथिंग एल्स इन द नेचर। Excess use of water also resulted something else in the nature. And what was the end result? Ecological stress. और स्ट्रेस होगा तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी या कम होगी? बिग क्वेश्चन। डॉक्टर सब्यसाची जो हैं वो डाइवर्सिटी और इकोलॉजी के ऊपर बड़े एक्सपर्ट हैं। तो अगर स्ट्रेस होगा इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में स्ट्रेस होगा तो डाइवर्सिटी क्या होगा, उसके ऊपर क्या असर होगा? व्हाई वी आर शॉर्टिंग लाइक दैट? इट हैज इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स। पॉपुलेशंस विल बी रिड्यूस्ड और दे मे गेट एक्सटिंक्ट। और ये तो हम पढ़ाते हैं, जंगल नहीं रहेंगे तो शेर नहीं रहेगा, शेर नहीं रहेगा तो हिरण की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हिरण की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो घास खा जाएंगे, घास की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो हिरण की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, ओवरऑल सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को। लिंक करें उसको इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ, देन समथिंग एल्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड विल बी डिफरेंट। दे विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन द नेचर। न्यूज में क्या आ रहा है तो वो समझ पाएंगे। मिलेट्स क्या है, मिलेट्स क्यों चाहिए, वीट की प्रोडक्शन से फायदा क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन से नुकसान क्या हो रहा है। पैडी फायदा देता है लेकिन पैडी पानी ढेर सारा कंज्यूम करता है, तो उसका इकोलॉजी पे क्या असर होता है। इसीलिए पैडी को वहां पे ग्रो किया। आई एम टेकिंग जस्ट 2 minutes मोर मैम। सो कन्वेंशनल ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंस कितनी होनी चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चरल कवर तो बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, वाटर यूज भी बढ़ गया है, और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली हुआ क्या है? वाटर टेबल हैज गॉन डाउन, एंड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पॉइजनिंग has occurred. This is what is anthropogenic changes in the ecosystem. And then we keep on shouting, oh, this has happened, that has happened, this should be stopped, that should be stopped. Somewhere we are moving away from the basics. That is why all these ecological crises are occurring. And this is what PM Modi ji jo bata rahe the, ki we have to go back to basics. Instead of conventional grains, rice and wheat, try to focus on other grains which used to be eaten. Now, lastly, whose responsibility it is? Who will ignite the spark? We, the teachers. It's we. We. By whom? It's we. So let's do it. I hope this basic information, I try to put forward little information about पहचानना कैसे है, मिलेट्स होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत तो कर सकते हैं एटलीस्ट, तो शुरुआत करें। और ये जो जितने भी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री घूम रही है और 300-400 रुपए की जो क्रीम्स बेच रही है, रिजुविनेशन की क्रीम, स्किन, हेयर, ये रिजन, इनसे परे हट के देसी सामान में बैक टू बेसिक्स पे आए। बाजरे का लेप, रागी का लेप करके तो देखें। मिट्टी से भी तो हम लेप करते हैं, गर्मी के दिनों में पित्त निकल आती है, घमोरियां हो जाती हैं, तो हम चिकनी मिट्टी से, क्ले से उसको लेप करते हैं। गांव में तो हम करते हैं, मैं तो अब भी करता हूँ। डैंड्रफ हट जाती है हेयर से, स्किन शाइनिंग हो जाती है, स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाती है। नेचुरल है, नेचुरोपैथी इसी को कहते हैं। कभी कभी सुबह रामदेव जी का जब वो देखता हूँ मैं, योगासन जब सुबह आ रहा होता है उनका 8 बजे शुरू होता है, तो उसके अंदर वो सारी वो चीजें दिखाते हैं। सो लास्टली यू कैन सी नाउ I've been speaking only, nobody आपकी तरफ से मनप्रीत मैडम ने रिस्पांस दिया और सुमन मैडम तो है ही हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ। So don't forget to smile, take this information on the positive side and spread this information. I hope we'll put our contribution towards the International Year for Millets, and at least बाकियों का नहीं तो कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हुए मिलेट्स खाएंगे। I'm already taking it. And I hope all of us will take it. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks for giving time. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.
for giving us such a deep knowledge about the millets. And yes, we are assuring you that we will, of course, ignite the young minds. And at least we have taken this message this year, and we assure you that once in a day, even we will start taking it for a snack. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Sir, I'm disconnecting. Thank you, sir. I Thank you very think much. thanks will be given by some participant. Right, sir. So, It's all because of you, sir. Your guidance. Your guidance. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. so maybe proceed for the next session because it is already 12:13. So am I audible? Yes, yes. So maybe proceed for the next session. Please. Session 2. Yes. So we are starting with our next second session of the day, and our eminent speaker has already joined in the first session only. Most welcome, sir. Good afternoon. And I invite our patron, Dr. Sharma sir, to introduce our next speaker, which has a depth of experience in the field of education. So Namaste, sir. It's my privilege to introduce a veteran, Professor Samrindranath Banerjee, who is a legend in its own way. Vast experience of teaching zoology for 36 years. And he has worked in the field of chromosomes, regarding chromosomes, sex determination, and karyosystematics with banding technology, and also on tumor angiogenesis, anti-angiogenic therapy using some herbal and anti-angiogenic components, developed a modified technique to study insect chromosomes, published more than 44 research papers and reputed journals, 5 books, national and international level publication, and has presented nearly 60 abstracts at national and international conferences in India and abroad. Guided more than 22 PG students for dissertation and 3 research students for their PhD degrees research. Many awards are there. We have selected few, but many awards are there. The list is very long. Starting with the fellowship, he's taken the fellowship, UGC funded fellowship at Bardhaman University in 1981 and awarded PhD degree in 1987. Maybe that some of us are not born by that time. And postdoctoral fellowship at Kansas University Medical Center, the USA in 2001. Fellowship of Zoological Society of Kolkata in 2005. He is awarded by UGC Travel Grant Award several times to go abroad for attending international conferences to present his finding in Greece 2005, in UK 2011, and Thailand 2015. He acted as a chairperson in many sessions, like in the session of 11 All India Congress of Cytology and Genetics, in Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. In 2002, as a co-chairperson in a session of the 10th World Congress on Advances in Oncology of Greece, and serve as a co-chairperson in the National Conference on Future India, Science and Technology, 27 and 28 February, organized by City College and Indian Science Congress Association, Kolkata. These are few. There are many more are there. He acted as a recorder in a session
of the Symposium on Geological Research from March 1 to 4, 1992, organized by Geological Society, and he delivered a talk in a session as a speaker in the third International Cancer Research Symposium, 19 to 21 December 2012, and then delivered a talk as a guest speaker in a UGC-sponsored state-level seminar, SGB College, Hooghly, SGB College, Bagati, Hooghly, West Bengal, February 2005. UGC-supported national-level seminar, Kulti College, Kulti, West Bengal, 28-29 November 11, and UGC-sponsored national symposium at Victoria College, Kolkata, December 1 to December 21, 2017. And he has been invited as a orator to the National Symposium of Physiological Society of India in December 2012, Kolkata. 18, All India Congress of Cytology and Genetics, Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, in January 2018. National Seminar in JES University, Salt Lake, in August 2022, and Seminar on Recent Trends on Bioengineering and Application in April 2023 in Buzz Institute of Technology, Buzz. Many are there, many awards, rewards, recognitions are there, and I'm really indebted by the core of my heart to welcome you, sir, and hope that your pulse of wisdom will give us a good guidance. Welcome you, sir. So now I'd like to going to present my talk. Madam Suman? Yes, sir. Okay. The picture is visible. Am I audible? Yes, sir. You are audible, visible. Screen is visible. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, Dr. A.K. Sharma. Namaste. Good afternoon. And all delegates, participants, also Madam Suman Madam and Dr. Majumdar, Dr. Sabyasachi Majumdar. It gives me great pleasure that I am going to deliver the talk, CRISPR, as you have assigned, as you have selected this topic, CRISPR. And before going to start my talk, I'd like to express my sincere thanks and gratitude to Dr. Sharma, to Dr. Majumdar, and Madam Suman Madam, as you have given me the opportunity to deliver the talk on CRISPR-Cas9. Am I audible, Madam? Yes, sir. You are audible. Very much audible. Thank you. So, CRISPR, clustered regularly interspersed short palindromic repeats, the ideal novel technology in the field of molecular biology. It is a groundbreaking gene editing technology with immense potential for various applications in medicine, agriculture, and research. That is the basic theme, focal theme of the CRISPR. Now, on the basis of the CRISPR-Cas9 technology, the unwanted DNA, the faulty DNA, the defective gene can be eliminated. Instead, a functional, normal gene can be inserted. That is the novel idea. But before going to start my lecture on
CRISPR, just I'd like to focus some historical timeline of DNA research. In the year 1869, Friedrich Miescher. Sujata ma'am sent a message. What? Sujata ma'am. Hello. I don't see my Please, participants are requested to mute. Please. Yes, sir. Okay. I'm scared to see. Will it go? Can I continue? Marina ma'am, please mute yourself. Shumon? Marina ma'am, please mute yourself. Okay. Please, sir. Sir, really sorry for the interruption. Can I continue my lecture? Please. Okay. So that is the historical timeline of DNA research. In the year 1869, Friedrich Miescher first noticed the nucleic acid in some cells. Later, in the year 1926, Frederick Griffith, MacLeod, Avery, McCarthy advocated the concept of DNA, that DNA is the genetic hereditary material, transmits hereditary information from one generation to the next. Later, in the year 1953, James D. Watson, Francis Crick, and Maurice Wilkins won the Nobel Prize in the year 1962 for the outstanding contribution in the discovery of double helical structure of the DNA. On the basis of two important observations, one is the Chargaff's rule, another one is the X-ray crystallographic method as discovered by Rosalind Franklin. Later, Nirenberg, Hole, Khorana discovered the concept of genetic code and tRNA structure. So since early 1900, there are so many discoveries widened the gap of molecular biology, like later genetic engineering, DNA fingerprinting method, polymerase chain reactions, DNA sequencing method, outstanding technology. But in the year 2020, Emily Charpentier and Jennifer A. Doudna discovered the most outstanding concept, technology, tool in the field of molecular biology, that is CRISPR-Cas9. So CRISPR-Cas9, the CRISPR-Cas9 enables the programmable genomic editing. CRISPR, that means cluster regularly interspersed short palindromic repeat, is an acquired immune system that protects against foreign virus. And it is also guided by the RNA. Now I would like to focus some important points about the historical background of the CRISPR-Cas9. Initially, in the year 1987, Japanese scientist Y. Ishima cloned accidentally the part of the CRISPR sequence from the genome of the Escherichia coli. Later, in the year 1993, researchers of Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of the TB in the Netherlands, published two important research papers on cluster interrupted direct repeats in that particular bacterium, Mycobacterium tuberculosis. A major addition to the understanding of the CRISPR came with the Jansen's observations that prokaryotic repeat cluster was also accompanied by a set of homologous genes that make up CRISPR-associated system. And in the year 2020, the Nobel Prize in Chemistry was jointly awarded to Carpentier and Doudna for their outstanding contribution on CRISPR-Cas9, a method to edit DNA. And the announcement marks the first time the award has gone to two women in the year 2020. They developed
the bacterial immune mechanism, commonly called CRISPR, into a tool that can simply, cheaply edit the genomes of everything, from wheat to mosquito, even in human. That is the photograph of Emmanuel Charpentier and Jennifer